तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले में। आप सभी देख सकते होंगे हम लोग आज क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, रेड डेड रेडेम्पशन खेलने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा गेम है। रॉकस्टार का बहुत ही फेमस गेम है भाई साहब। ये अभी अभी पीसी पे आया है और ये 10 साल पुराना गेम है। और ये PS3 पे अवेलेबल था, लेकिन हाल ही में रॉकस्टार ने इसको पीसी पे भी वो कर दिया है लॉन्च। और मैं तुरंत उसको डाउनलोड किया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो शुरू करते हैं इस जर्नी को। बहुत ही बड़ी सीरीज़ बनने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। नहीं शुरू करते हैं, चलो भाई। नॉर्मली खेलेंगे भाई, लैपटॉप की। ओ भाई साहब, भाई असली गेमिंग है यार ये, क्या ही बताऊँ। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है गेम के ग्राफिक्स। 10 साल पहले रॉकस्टार ने बनाया है भाई, यकीन करोगे। रॉकस्टार तो भाई हमेशा से फेमस कंपनी रही है गेमिंग बनाने में। मतलब जितने भी उसने गेम्स बनाए हैं, चाहे वो GTA की सीरीज़ हो या फिर रेड रेड रेडम्पशन की। चलो थोड़ा स्टोरी पे फोकस करते हैं। म्यूजिक सुनो यार, म्यूजिक सुनो। ओह, लेट्स गो। भाई गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को। सैंडियागो प्रोडक्शन, ब्लैक वाटर स्टेशन, रेलवे स्टेशन आया भाई। 90s पे बेस्ड है ये गेम। काउबॉय वाली फीलिंग आ रही है। ओके, रेड डेड रिडेम्पशन। और यहाँ अपनी ट्रेन चल चुकी है। Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No. भाई birds भी fly कर सकती है। Can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. सही सोच रही है तू। हेलीकॉप्टर्स आएंगे भाई, सब उड़ेंगे, हम भी उड़ेंगे, एरोप्लेन्स। Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, ये बुढ़िया ज़्यादा बोल रही है our भाई। family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything.
There are many things that money cannot buy. It seems अरे that मनी money तो बाय कर can सकता है भाई। buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. चलो भाई, आ चुके हैं अपने आर्माडिलो पे। कौन सी जगह है भाई नहीं पता। सब कुछ नया है अपने लिए, फ्रेश गेम है एकदम। ओके, कंट्रोल, गेम सेव हो गया अपने आप। अरे तू मेरे को चलना मत सिखा यार। WASD। अरे बस 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 बस। तो अपन को येलो मार्क पे जाना है। द ब्लिप ऑन योर मैप इंडिकेट्स द मिशन ऑब्जेक्टिव। हेड टू द येलो ऑन योर मैप एंड अप्रोच द एक्स। ओके, कहाँ आ गए? बार में, रेस्टोरेंट। क्या कर रहा है भाई ये? इसकी अरे भाई 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 क्या कर रहा है भाई? Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. अरे अपना घोड़ा तैयार बैठा। चलो हॉर्स चलाने मिलेगा। लिटरली काउबॉय बन जाएंगे भाई। तो एकदम बढ़िया पियानो बजा रहा है, एक नंबर। व्यू देखो भाई, तुम लोग एक बार व्यू देखो भाई। तुम लोग के पास अगर पीसी या फिर लैपटॉप नहीं है ना भाई, बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. If you say so. Come on! अरे भाई ट्रेन चल गई भाई, अभी दब जाते। So you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the port in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit. अरे मेरा You don't घोड़ा कहीं भी mind घुस me गया। saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. All kinds of soldiers around back then. Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Yeah. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up. क्या बोल रहा है I'm a भाई, कुछ married समझ ही नहीं man, आ I'm रहा। afraid. Ain't we all? Gio. अबे कहाँ लेके जा रहा है? Yeah, so it was the marshal who hired me.
Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs Side asking दे, for a side. guide. I guess it's none of my business. That's right. ओए साइड दे. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Almost there, Mr. Martin. Just over this hill. Come. भैया आ गए. कहाँ गए थे? बाहर हैं कि कहाँ हैं? अभी आए थे अंदर. Whoa there. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. भाई ये कैरेक्टर बैडएस लग रहा है मेरे को तो. लेक अप्रोच फोर्ट मर्सर. कौन है भाई? Let's go. अपन को यहाँ जाना है, अप्रोच करना है, किसी को मनाना है शायद. देखते हैं कौन है. कौन है भाई? आओ बाहर. Bill! बिल. बिजली का बिल. Bill, I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! अच्छा बिल विलियमसन. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. ओ भाई ओ. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh, ओ भाई धोखा. do I look like I need saving? घमंडी है भाई ये बंदा. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. भाई बेइज्जती कर रहा है अपनी ये. Well, अब मारेगा. ओए. Oh. Poor John. भाई गेम स्टार्ट हुआ है कि खत्म हो गया? अपना पहला कैरेक्टर पहली मिशन में ही गोली खा गया भाई. लेकिन इतने जल्दी तो नहीं मारेंगे. देखते हैं. पड़ा है भाई. अरे ये तो ट्रेन में बैठी थी. वही है, ट्रेन में बैठी थी ये अपने साथ. कहाँ लेके जा रहे हो बे मेरे को? Okay, new friends, old problems, of course.
तो हमने पहला मिशन हो गया मतलब अपना। ये बंदी ने ले आया अपन Well, को, you're alive. बचा लिया भाई इसने So, अपन को। scene? So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. बस $15। Sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? अच्छा 90s के I समय mean, में was तो that भाई it? $15 Is भी that why बहुत you थे। went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. अच्छा बॉनी। You may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. मेरी टोपी दे। And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. लड़की ने बचा लिया भाई अपन को। $15 उसको चुकाने हैं अपन को। वो इसको दर्द हो रहा है। भाई ये जो बैकग्राउंड में हारमोनिका बज रही है ना भाई, फीलिंग आ रही तगड़ी। Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. अरे मेरा घोड़ा कहाँ है? हाँ डिटेलिंग है भाई, इसको दर्द हो रहा है, देखो चल रहा है। There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hop on up. You won't bite. Let's make a tour चलो of the ranch. चल चेतक, Get your bearings. आज से तेरा नाम चेतक। भाई कहाँ लेके जा रही है? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. अच्छा ये जनरल I don't स्टोर think है। I've ever seen a ranch with its own store before. अबे चिपक के क्यों चल रहे हो इतना? And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions अस्तबल है, are यहाँ hard यहाँ से to घोड़े erase. चुराऊंगा मैं। That's the train station. Things sure ये have अपना ट्रेन changed स्टेशन since है। the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. अबे ट्रेन आ गई ना तो दोनों मर जाएंगे। अरे बेचारे का दर्द हो रहा है इसके That's पेट the में। barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. फार्म। Come on, Mr. Marston, pick up the pace.
house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. प्रेस एफ। अच्छा घोड़ा बांध सकते हैं भाई इसमें, गाड़ियां तो है नहीं, घोड़े से ही ट्रैवल करना है। चल चेतक, चलता हूँ मैं, ध्यान रखना बेटा। आ रहा हूँ ना। How about a cold drink, Mr. Marston? अरे बिल्कुल। Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. ओए शॉटगन दी I want है। to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. अबे मेरा घोड़ा कहाँ भाग रहा है? देखो मेरे को देखा तो वापस चला गया अपनी जगह पे। डर मत चेतक, कुछ नहीं करूँगा। Easy now. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. राइफल लेके निकले कहाँ हैं अपन? Come on. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, get rid of them once and for all. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. अच्छा इनको मारना है। अरे मेरा निशाना पड़ा। मार दिया सबको। भाई बेचारों को भगा भी तो सकते थे। We should keep moving. There's still a ways to go. Yeah! If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Whoa! That's it! Damn coyote! ओ भाई भगदड़ सी मच गई। Straight for the chicken. Nice shot! Yes, you got one! That coyote won't be back! That is that. Looks like that was the last of the coyotes. It's a shame we had to lose any of the chickens. भाई पूरे मैंने ही मारे हैं, इसने I'll कुछ नहीं pay you किया। way to your room. भाई मजा आया लेकिन फुल। You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure.
But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, अरे Mr. साइड तो दे। Marston. अच्छा ये मेरा घर है। Thank you for your help, Mr. Marston. Welcome. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. You can sleep in the bed? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। If you sleep, you will wake up 6 hours later. अच्छा, हम सोएंगे तो 6 घंटे बाद उठेंगे। एक्स्ट्रा एमो हमारे ट्रंक में रखी हैं, हम उठा सकते हैं ट्रंक्स। चलिए, तो हमने बहुत सारे मिशंस कंप्लीट कर लिए। इस कंटेनर में है हमारी एमोस। भाई पहले गेम को सेव कर लेते हैं सो के। ओके, तो अपनी गेम सेव हो गई है। ओके, सेव कर दी। काफी अच्छा शहर है ये। चक्कू है भाई मेरे पास। अबे अबे भाई भाई भाई, मार रहे हैं भाई मेरे को। मैं तो सिर्फ मटका फोड़ रहा था। भाई उसके घर का मटका फोड़ा तो मार दिया उसने। यहाँ तो सब एकदम डेंजर है, कोई भी सबके पास बंदूक है। ये देखना, इस आदमी को डराऊंगा। तो मार क्यों रहे हो मेरे को? ये घोड़ा किसका है? ओए काउंटी क्या? लॉ एनफोर्समेंट विल परस्यू यू। अब मेरे को जेल हो गई। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अच्छा, रेडार के बाहर जाना है। रुक रुक रुक, इस पे पकड़ के भागूंगा। भाई मार दिया मेरे को। इसको तो मारूंगा। $180 की बाउंटी लगी है भाई मेरे को। A few moments later. ये कुत्ता किसका यार? ओए, हे डॉगी, हे डॉगी। अबे लात मार दी। ओए 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 ओए, ओबे भाई भाई भाई, ये दौड़ा रहा है बे मेरे को। माफ कर दे भाई। भाई इतना रियल है भाई। सॉरी सॉरी। आजा आजा आजा। अबे काट रहा है, काट रहा है। छोड़ दे भाई। अबे कितना काटेगा? ओके गाइस,
तो ये था रेड डेड रेडेम्पशन का पहला गेम प्ले वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी तो हम लोगों ने ज़्यादा मिशंस किए नहीं हैं क्योंकि पहला गेम तो यार समझने में लगता है क्या हो रहा है सिस्टम। तो इसका नाम जॉन मार्स्टन है जो कि बहुत ही बैडेस बंदा है। अरे भाई ये कुत्ता वापस आ गया। हाँ तो मैं कह रहा था ये बहुत ही बैडेस बंदा है और फिलहाल मुझे कुत्ता दौड़ा रहा है। तो आई होप आपको ये लोग गेम प्ले पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तो इसके बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे। ये भाई इसमें मेन मिशन 57 मिशन हैं, बहुत बड़ा गेम है। तो बने रहना इसी तरह चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतने बार बोलूँगा भाई मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।